So we have reached Nepal. This is what the airport looks like. Huge hoardings with "Welcome to Nepal." ये बुद्धिस्ट स्टैचू आपको ठीक इमिग्रेशन के पास देखने को मिलेगा एंड इट्स completely giving off the Nepal vibes. So I just entered into Nepal airport and I got this SIM in less than 10 minutes with an Indian passport, and I had to give them 350 rupees, and since they accept only Indian currency below 100, I paid them 350 in 150 notes, and I got this Nepali currency in return. This is 60 rupees. As soon as you get out from the airport, there's a small cafe called the Bakery Cafe where you can find cold pressed juices. That's the Bakery Cafe. So we're all checked into my hotel and this is what the room looks like. That's my mom asleep right there. It's a gorgeous, gorgeous room. Hotel Himalaya, highly recommended. And let's see the view. Yes, that's the pool right there. Nice, right? I'll take a step back so you can see how huge this mirror is, and it is great when you want to have an outfit check. This is what I'm wearing now. It's cute. It's rabbit wool. And let's see how today goes. It's been really tiresome because as soon as we got down from the flight, it's been one tiring thing after the other. First, the immigration process takes a lot of time, mainly because there were so many people. And then the baggage, like the check-in baggage, it took a lot of time to come, and then afterwards we had to wait for the car. But we went to the bakery and had some fresh juice. I had some watermelon juice, and now ready for the day to start. It's already 5 o'clock, and we're here for a conference, so we're gonna be busy with that. But my mom is here to travel, so she'll be traveling. But this is what I enjoy. There's a nice quiet spot near the window where I can just sit and read a book or use internet. That is also something that you need to know. Like, I also thought that I should get some international roaming activated in my SIM because I'm here for 2-3 days and I had to make sure that I had access to internet. First, most of the cafes, restaurants, and even the hotel itself has Wi-Fi, and the Wi-Fi is great. But I still needed mobile internet to make sure that whether if I'm traveling outside and I need to check maps or just do a simple Google search, I can do that. But the best idea is not to just you activate international roaming in your personal phone, but getting a local SIM card, that's the best possible thing you can do. Because I mean, if you're using Airtel, an international pack of just 5 GB data would cost you around 3,000 rupees, and I got 10 GB data from an Ncell service, which is the local internet provider here, and I got it for 340 rupees. 340 Indian rupees. That's somehow I think 500 Nepali rupees. So that was great. I got 10 GB data and I can use internet wherever I go. My first day in Nepal and I already caught a cold और दवाई लेने निकले थे यहाँ पे. इतने में मंदिर दिख गया and my mom, being my mom, wanted to go. यहाँ गेट के पास पहुँच के पता चला कि अभी मंदिर यहाँ से बहुत अंदर जाके है. तो बट सिंस दिस मंदिर इज़ वेरी क्लोज टू द होटल, तो mom is planning to go. And these are some intricate Nepali drawings of holy gods and goddesses. Since हम already बाहर आ ही चुके थे and mom ने अभी तो कुछ खाया नहीं था, तो we found this very cozy, very nice restaurant called The Entrance, and it had a great vibe. It had 2-3 different sitting spots. आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी बैठो. And there's a rooftop restaurant as well. So this is day 2 of being in Nepal, and today we're going to some Tibetan settlements and for a field trip as part of the conference. That's the outfit for today. And the reason my voice sounds so bad is because I got a cold yesterday and it still hasn't improved. For some delicious breakfast. We were driving down and ये पोल दिखा. यहाँ पर
इसके ऊपर बहुत ही इंट्रिकेटली कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है। काठमांडू लुक्स लाइक जस्ट एनी अदर टाउन, द ओनली डिफरेंस इज कि गाड़ियों पे जब आप नंबर पढ़ते हो और आपको समझ में नहीं आता तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप कहीं और हो। एंड प्लान्स चेंज हुआ तो इंस्टेड ऑफ अ तिब्बतियन सेटलमेंट वी रीच्ड एन एनजीओज ऑफिस। एंड ये मोटिव कितना क्यूट था। अर्कै मान्छेले आफ्नो जग्गा दर्ता गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहीँनिर सुकुम्बासी भएर बस्नु परिरहेको। दीज गर्ल्स जो स्लम में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए काफ़ी काम कर रहे थे, ये केवल नेपाली में बात कर रहे थे। हालांकि इन्हें हिंदी समझ में भी आती थी और ये बोल भी पाते थे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जब आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हो तो इट्स ईजियर टू डू इट इन योर ओन लैंग्वेज। सो हमारे साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे जिन्हें नेपाली आती थी, दे वर ट्रांसलेटिंग वट एवर द गर्ल्स वर सेइंग टू अस। Some of them that they ask for to go to the village and you have land and so and so. And even the people have a small plot of land in the rural areas is not sufficient for the livelihood, right? Then I thought before the day ends we should go out and explore, so we did. So I think we have reached the Connaught place of Nepal. This is the Durbar square and literally feels like Connaught place, except of course these heritage monuments and just the architecture type, it shows you that you are in fact in Nepal. दरबार स्क्वायर इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस कि अगर आप कभी भी काठमांडू जाओ तो यहाँ तो जाना बनता ही है। द रीज़न इज़ कि इस छोटी सी जगह में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अलग अलग प्राचीन मंदिर हैं, ये राजा का महल उस टाइम का रॉयल पैलेस है, एंड इसका आर्किटेक्चर, द एंटायर सेटअप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप एक टूर गाइड करते हैं तो आपको बेटर तरीके से बता सकता है कि ये है, ये वो है, बट सिंस मेरे पास टाइम बहुत कम था तो आई वेंट आउट एक्सप्लोरिंग ऑन माई ओन। ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे आप फोटोग्राफ खिंचवा सकते हो एंड मोस्ट पॉपुलर अमंग यूथ जो इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ्स डालना चाहते हैं। साथ ही में मुझे भी बहुत सारे लोगों की तरह गलतफहमी हो गई थी कि बिकॉज इट्स अ हिमालयन स्टेट तो बहुत ठंड होगी यहाँ पे, तो मैंने ज़्यादा गर्मियों वाले कपड़े पैक नहीं किए थे। बट व्हेन वी रीच देयर वी रियलाइज्ड कि हवा अच्छी खासी चल रही थी लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी। एंड ये स्पॉट जो है, ये स्पॉट काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे पिजन्स को आप फीड कर सकते हैं। इसके साथ ही में काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग जगह जो है ये पर्टिकुलर स्पॉट इस पूरे दरबार स्क्वायर में। फिर आप अंदर एंटर करते हैं। दिस इज़ हनुमान ढोक पैलेस म्यूज़ियम एंड यहाँ पर आपको नेवाड़ी स्टाइल का आर्किटेक्चर नज़र आएगा जो कि थोड़ा बहुत जापानीज़ आर्किटेक्चर से मिलता जुलता लगता है। ये जो कोर्टयार्ड आपको दिख रहा है इसको नस्ल चौक भी कहते हैं एंड यहीं पर जो पुराने महाराजाज होते थे उनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुआ करती थी। सो दिस द प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ इज़ द दरबार स्क्वायर एंड दिस इज़ द रॉयल पैलेस ऑफ दरबार स्क्वायर। The royal palace is where the Nepalese kings used to live, and you can see that in the architecture. This is a door frame, but you can see how intricate the carvings of the door frame are. And if you zoom in a bit more closely, you'll be able to see these are skulls that have been carved into the doors, probably to scare away intruders. इसी पैलेस के अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं and this is probably the कुमारी गृह. Look at the intricate wooden carving and design. This may give you a very Japanese kind of vibe. But no, I'm not in Japan, I'm in Nepal. And the entire palace, right here, you can see that it all looks like a very Japanese design, right? And the reason for that is that there's a lot of cultural interchange and influence from Japanese architecture. एंड इस पर्टिकुलर स्पॉट को जो है वो कुमारी गृह भी कहा जाता है बिकॉज कुमारीज जो आपने बहुत सारी पेंटिंग्स नेपाल में देखी होंगी जो मैंने भी आपको दिखाए इन विच देयर इज अ लिटिल गर्ल वेयरिंग ऑल रेड और आई मेकअप हुआ हुआ है, वो एक लिविंग गॉडेस माना जाता है नेपाली कल्चर में. शी रिजाइड्स हियर इवन स्टिल. एंड देन दरबार स्क्वायर में ये एक पशुपतिनाथ टेम्पल भी है. द ओरिजिनल पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन जस्ट फॉर द पीपल जो वहाँ विजिट नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ पे भी एक पशुपतिनाथ टेम्पल है. यू कैन सी अ लैंड रोवर बिहाइंड मी, राइट? एंड यूड बी सरप्राइज्ड
इतने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में ये लैंड रोवर कहाँ से आ गई? तो उस लैंड रोवर के बारे में लिखा है कि 22 जनवरी 1962 में देयर वाज अ बॉम्ब अटैक इन जनकपुर, जिसमें लेट किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह की इसी लैंड रोवर जीप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो दिस इज जस्ट टू मार्क दैट इवेंट कि 22 जनवरी 1962 में क्या हुआ था, एंड इसीलिए इतने हिस्टोरिक महल में ये लैंड रोवर लगी हुई है। इफ यू कैन जस्ट सी दिस। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मैं काठमांडू में ज़्यादा दिन तक रुकी नहीं थी, तो दरबार स्क्वायर वॉज द ओनली पॉपुलर स्पॉट आई कुड विजिट। आई डिड गो टू पशुपतिनाथ टेम्पल ऑल्सो, लेकिन वहाँ पर शूट करना मना है, तो आई कांट शो यू दोज विजुअल्स। आफ्टर हेलिंग अ लोकल टैक्सी we are heading back to the hotel because we are here for the conference, so we have to attend the conference also. And from the Durbar Square to Pattan, where our hotel is, we're traveling in a taxi. Another important fact is Kathmandu में आप taxi services इस्तेमाल कर सकते हो, but it's easier if you have a Nepali SIM, and they also have a bike ride service called Pathao. Until and unless a flash flood comes and it wipes out an entire village, it wipes out an entire set of people who were living downstream, mainly because they were not warned beforehand that this area is under threat. नेपाल आए और मोमोज नहीं खाए तो क्या नेपाल आए। Today has been a very busy day, but after the day, the conferences and everything ended, we are finally out to explore, and I'm right now in Thamel Street. This is what Thamel Street looks like. It's all lit up with a lot of places, a lot of like food courts and cafes and junctions filled with spots for having momos and all different kinds of Nepali cuisines. And it's just a more happening place than the rest of Kathmandu, and it stays open till late at night. Other places in Kathmandu, especially Patan, Lalitpur area, it shuts down around 9 o'clock, and other places also 9:30, everything is closed. But I have heard that Thamel Street stays open, happening and amazing till late in the night. So we were just walking around on Thamel Street, and I found a Japanese restaurant, and I have always had this fascination towards Japanese cuisine, so I thought to try it. Just look at the aesthetic. They offer this complimentary drink to all the customers, and this is me practicing if I can use chopsticks right. Yes, I can. It takes some time though, and I can't do it when someone's watching me. So you can easily find this restaurant. So that's some tofu. And finally my order is here. I ordered some sushi, and the best thing about this restaurant is that they have pictures of the food along with the names on the menu. So अगर आपको पता भी नहीं है Japanese dishes के बारे में, you can still get a guess, nice guess. I ordered some udon noodles as well. Next morning, I took a flight back home, and the best thing about traveling to Nepal by air is that you can get a great view of the Himalayas if you're sitting on the window seat, and it is breathtakingly beautiful. The Himalayas covered in ice. You can probably get a good view of the Mount Everest, and कैसे 1.5 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता.